Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the introduction of physics. This is the very first topic of our course, and today we are going to study the introduction of physics, the importance of physics and why we learn physics, what is the need to study the physics. So जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त प्री ह्यूमन या जॾहिं खां ह्यूमन हिन दुनिया ते आया आहिनि, जॾहिं खां वठी फर्स्ट ह्यूमन हिन दुनिया ते आयो त अचण सां ई उन ज़रूरु सोचणु शुरू कयो त ॾींहुं ऐं राति कीअं थिए पई, या फायर जेका बाहि आहे उन जी नेचर छा आहे, माउंटेन्स कीअं ठाहिया आहिनि। इन्हनि सभिनी क्वेश्चन्स जो सवाल या इन सभिनी क्वेश्चन जे सवालनि जो जवाबु जेको आहे उनखे हासिलु करण जे लाइ असां फिज़िक्स जी तरफ़ वधियासीं। त फिज़िक्स हिकु साइंस जी ब्रांच आहे ऐं साइंस ॿिनि तरह जूं थींदियूं आहिनि, हिकिड़ियूं नेचुरल साइंसिस ऐं ॿी फिज़िकल साइंसिस, बायोलॉजिकल साइंसिस ऐं फिज़िकल साइंसिस। त फिज़िकल साइंस में असांजी फिज़िक्स अची वञे थी पई ऐं फिज़िक्स जेका आहे उहा फिनोमिना इन्हनि फिनोमिना खे एक्सप्लेन करे पई, गैलेक्सीज़ खे एक्सप्लेन करे पई, ओशन वेव खे एक्सप्लेन करे पई, ऐं असांजी कंस्ट्रक्शन जेके बिल्डिंग्स ठहनि पियूं उन्हनि जी कंस्ट्रक्शन असांजी फिज़िक्स में अची वञे पई। पर फिज़िक्स सिर्फ़ु एसि ताईं लिमिटेड न आहे, फिज़िक्स हिकु वसी ब्रांच आहे ऐं पूरी यूनिवर्स जी स्टडी असांजी फिज़िक्स में अची वञे थी पई। तव्हांजे बुक जे मूजिबि जेका असां डेफिनेशन वठूं पिया फिज़िक्स जी, उहा इहा आहे त फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। Now there are two important terms, matter and energy, the study of matter and energy. And if we see in the whole universe, we are finding the only two things, either the matter or energy. So therefore we can say that the physics deals with the whole universe. It is the study of whole universe. It's a very important branch of the science. But before studying physics, it's based on mathematics, because we have solutions in mathematics. All the phenomena and their reality is explained by the mathematics. So therefore math is the base of physics. Math is the base of physics. At first we have to learn the math, and the base of the math is the physics is the math, and then it is not limited here. The all other sciences are also related with the physics. We cannot say that physics is limited to the cosmology, sky, stars, or the rising sun, but it is much more. If we see, the physics is the then base of chemistry, because chemistry is the study of atoms, their interaction, and all the interaction of atoms occur in a physics nature. So atoms collide with each other. In nucleus there is a nuclear force. Again we are talking about the force. So we can say that chemistry's base is physics. Without physics, chemistry is nothing. But the things is not stopped here. The base, the chemistry is then base of the biology. If we study ourselves, if we are going to study the human being, it is also related to the physics, because chemistry leads to us biology. Our mind, our respiratory system, our thinking process, our mechanical movement, these all things come into the scope of physics. So this is the importance of physics. Physics is very much important. And before that you can see that all these sciences are related to mathematics. So हिते मुंहिंजी हिकिड़ी रिकमेंडेशन बि हूंदी त अक्सर स्टूडेंट्स जेके हूंदा आहिनि त सोचींदा आहिनि त अगरि उन्हनि खे मैथ न पई अचे त उहे बायोलॉजी खे एज़ अ मेजर सब्जेक्ट खणंदा आहिनि, पर बिल्कुलु इहो ग़लति आहे। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, अगरि तव्हां बायोलॉजी चूज़ कयो था त तव्हांखे सभ खां वधीक मैथमेटिक्स अचणु घुरिजे, छो त मैथ हिननि सभिनी शयुनि जो बेस आहे। मैथ खां सवाइ तव्हां बायोलॉजी में बि कुझु नथा करे सघो, ऐं इहा तव्हांजी बिल्कुलु सोच ग़लति आहे त अगरि तव्हांखे मैथ न पई अचे त तव्हां बायोलॉजी खे सब्जेक्ट खणो था। उन खां वधीक अगरि असां पंहिंजे इंट्रोडक्शन जे तरफ़ अचूं त असां फिज़िक्स में पढ़ंदासीं अॻिते हली करे फोर्सिस जे बारे में। फोर्सिस, what is the force, what are the types of the force, different types of the force, how forces affect our daily life and routine. We are going to study about the acceleration, that is a vector quantity, and force we have already talked about that it is a product of mass and acceleration. We are talking about the displacement, that is the product of velocity and time t.
So these things are we are going to study in future videos, and we are also going to study about the scalars and vectors. What are the scalars? What are the vectors? These are the quantities, physical quantities. Certain quantities has a direction and certain quantity doesn't have any direction. So this was all about the introduction of physics. And if we talk about some important figures in the field of physics, there are three scientists which are prominent in the field of physics. The one is Isaac Newton, and other one is Maxwell Planck, and the third one is Albert Einstein. So before coming to the physics, you have to study the Newton's physics, Newtonian physics, classical physics. He explained the motion of Earth and orbital motion, gravity, and much more things. He thought that the things are not falling on Earth in a manner. So उन ॿुधायो असांखे त शयूं ईअं ई अर्थ जी तरफ़ छिकिजी न पियूं अचनि, उहे ईअं ई न किरनि पियूं, उन्हनि जे पोयां ज़रूरु का शइ आहे। न्यूटन जा लॉज ॾिना उन खां पोइ मैक्सवेल प्लांक्स असांखे क्वांटम फिज़िक्स जे बारे में ॿुधायो, ऐं तेसि ताईं फिज़िक्स सिंपलर हुई, पर जॾहिं अल्बर्ट आइंस्टाइन आयो त उन फिज़िक्स खे अञा वसी करे छॾियो ऐं फिज़िक्स अञा वधीक कॉम्प्लेक्स थी पई। ऐं हाणे असां सोचे भी नथा सघूं त फिज़िक्स केॾी कॉम्प्लेक्स थी पई आहे, छो त हुन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ जे बारे में ॿुधायो, ब्लैक होल्स जो कॉन्सेप्ट, ऐं उन खां अलावा इलाही सारियूं शयूं अची चुकियूं आहिनि फिज़िक्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।